हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। और आपने पीछे की सारी वीडियोस देख ली होंगी और आप सब लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम लोग आज कुछ नए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। और मैंने आज क्वेश्चंस पहले ही लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके, तो इसलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है आज। तो कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। कुछ एक एग्जांपल चाहिए। तो राइट एंगल है हमारा C पे, इन विच AB गिवन है 29 यूनिट्स एंड BC हमारी है 21 यूनिट्स। और ट्राइंगल ABC इक्वल टू थीटा है, मतलब यहाँ पे थीटा गिवन है और हमें वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी है, ये और ये इन्हें सॉल्व करना है। तो ये जो डायग्राम है ये ऑलरेडी गिवन है, और नहीं गिवन हो तो भी हम बना सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें गिवन है कि राइट एंगल एट C, मतलब C पे राइट एंगल आने वाला है हमारा, और थीटा है B। तो B एंगल जो है हमारा उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास थीटा। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बाय using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम आप सब लोगों को पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास हमें निकालना है परपेंडिकुलर, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इज दिस AC। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हाइपोटेनस इज और AB, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC और CB स्क्वायर। तो हमें AC फाइंड आउट करना है। तो वी विल टेक हियर AC, तो देन वी विल राइट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। नाउ वी कैन पुट आवर वैल्यूज़। वी हैव आवर वैल्यूज़। AB इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस BC इक्वल टू 21 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 21 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 441, तो विच विल बी इक्वल टू 400। तो AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 400। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 20 का स्क्वायर रूट होता है। तो इट मीन्स वी हैव आवर AC 20 यूनिट्स। सो AC आ गई हमारे पास 20 यूनिट्स। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एज वी नो दैट कॉस थीटा इज आवर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आवर बेस इज CB अपॉन AB। तो CB इज आवर 21 अपॉन 29। तो दिस इज आवर कॉस थीटा। Now we can find our sin theta. तो sin theta is our perpendicular upon hypotenuse. तो our perpendicular here is AC and hypotenuse is AB. So we can write our sin theta as 20 upon 29. So we have our sin theta and cos theta. Now we will put these values into equation 1 and equation 2 so that we can get our values. The first question is our cos square theta plus sin square theta. तो cos square theta, तो cos theta की वैल्यू we have 21 upon 29 का होल स्क्वायर प्लस sin, as we have sin square theta is our 20 upon 29 का स्क्वायर। तो वी कैन राइट 29 का स्क्वायर, वी कैन टेक आवर LCM। तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो एज वी नो दैट 21 का स्क्वायर इज 441 प्लस 20 स्क्वायर इज और 400 अपॉन 29 का स्क्वायर। तो 441 प्लस 400 इज इक्वल टू 841। एज वी नो दैट 29 स्क्वायर ऑफ 29 इज 841. So now we will cut these values
and we will find our answer 1. So we can say that the value of question number 1 is equal to 1. Now we will take our second question, that is our cos square theta minus sin square theta. This is for you students. You have to find out same, the way of finding this is the same as we find this. The only difference there is this minus and here was plus. So we can take 441 minus 400, so we can write here 41 upon 841. So this will be answer, and if these values are cut to each other, then cut it. So this is our question, example number 1 here. So we can say that, and I hope your doubts are clear regarding this question. Now we will move to our next question. As you can see, this is our next question. In triangle OPQ, right angled at P, ये भी राइट एंगल्ड है हमारा P पर, और OP की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कोस Q. सो वी हैव अवर ट्राइंगल here. This triangle is given in question, so we will write first, we will solve this question. So we have our equation OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. So we can write here OQ is equal to 1 plus, because minus PQ right के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस PQ. तो we will have this equation 1 plus PQ, equation number 1. Now we will put our Pythagoras theorem to this triangle. So by using Pythagoras theorem, we can say that Pythagoras theorem, we have OQ square is equal to OP square, that is our perpendicular, and PQ square, that is our base. So now we will put this value from here to here. From equation 1 we will put value of OQ here. So value of OQ is 1 plus PQ square, PQ का whole square, and OP, we have our OP as 7 centimeter. This is given in question, so we will write 7 का whole square plus PQ square. We will put PQ as it is. We will write here from equation 1, because we have taken the value of OQ from equation 1, that's why we write here from equation 1. So 1 plus PQ square. Now here we will apply a formula, that is our a plus b का whole square. And as we all know, we have studied this formula in previous classes. So as we have all know that a plus b का whole square is always equal to a square plus 2ab plus b square. This is our formula, and we will use this formula here. Here our a is 1 and b is our pq. So we can write 1 plus 2pq plus pq square is equal to 7 का square is 49 plus pq square. Now we can cut this value pq square, because pq square minus pq square will always be 0, that's why we will cut it. So now we have 1 plus 2pq is equal to 49. So 2pq will be equal to 49 minus 1, because plus 1 this side जाके minus 1. So we have pq is equal to 48 upon 2. 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में. दैट्स वाई वी राइट हियर 24. तो 24 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ आवर PQ. So we have our value of PQ. Now we can easily calculate our value of OQ by putting this value in equation number 1. So we have OQ is equal to 1 plus PQ. So PQ is our 24 centimeter
So that's why we will write here 1 plus 24, 25 centimeter. This is our value of OQ. So OQ is our 25 centimeter. We will write this in our diagram. PQ is our 24 centimeter. Now we have to calculate sin Q. As we all know that sin Q is always equal to perpendicular upon hypotenuse. So sin Q with respect to this angle, the perpendicular is our opposite side. So perpendicular is our OP and hypotenuse is our OQ. So that's why we can say that the value of sin Q is equal to 7 upon 25. And this is the first value. Now we have to calculate cos Q. So cos Q we always have, and we all know that cos Q is always equal to base upon hypotenuse. So with respect to angle Q, base is our adjacent side with this angle. So adjacent side is PQ. So we will write PQ upon OQ. So PQ is our 24 centimeter upon OQ is our 25 centimeter. So this is the value of cos Q. So now we have our values of sin Q and cos Q, and we have to determine these values. So we have these values here. I hope you get this question easily. And now I have the second question for you. Similar question. This question is as similar as this one. The only difference here is this: PR plus QR is equal to 25 centimeter, and there we have OQ minus PQ is 1 centimeter. The only difference is minus plus. So you can easily calculate this question from above question. And I am giving here you a hint in this question. I am drawing its diagram so that you can easily calculate this. In triangle PQR, right angled at Q. So P, this is Q and this is R. Right angled at Q. This is our right angle and there is some angle, and PR plus QR is our 25 centimeter. PQ is given here 5 centimeter. So now we have to calculate. We have to apply. So first we have to apply Pythagoras Theorem. Then we will put this value in Pythagoras Theorem. Then we have our value of QR and और बाकी वैल्यूज़ भी हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे. So you can easily calculate this question just like this way we have solved it. So थैंक यू सो मच. इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू सो मच. मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में. थैंक यू.